जय जगन्नाथ सांग मैंने मो स्वागत करुना वीडियो रे। आज टॉपिक हूँ डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो आज टॉपिक रे कौन कौन देखिबा, डिजिटल प्रिजर्वेशन कौन, तार आवश्यकता कौन अच्छी, तार डिफरेंट स्टैंडर्ड्स गुड़ाक, मेथड्स, टेक्निक्स आ डिफरेंट प्रोजेक्ट जोटा डिजिटल प्रिजर्वेशन में करा जायछि। किछि दिन हला वीडियो आसी नथला ड्यू टू वर्क प्रेशर, मते टाइम अनअवेलेबल जो मु वीडियो किछिटा अपलोड करि नथली। ऑलमोस्ट गोटे वीक हे मु ट्राए करी तमर सिलेबस वीकेंड्स रे मते ऑफ मिलु छि, मु ट्राए करी वीकेंड्स रे तमर सिलेबस गुडार मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करिया पे। सो चलंतु देर न करी स्टार्ट करिया वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखियो डिजिटल प्रिजर्वेशन कोन। ओके देखो वर्तमान कोन है छि लाइब्रेरी रे मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज जोडा फेस करियो पड़छि लाइब्रेरी प्रोफेशनल मानन को कोन जे लाइब्रेरी माने कोन इंक्रीजिंगली आर्काइव करियो स्टार्ट करलेन हला। कोन आर्काइव करंदी डिजिटल कलेक्शन देखो किछि जिंस रहउछि जोडा कि बॉर्न डिजिटल माने डिजिटली ही क्रिएट ही थाउछि, आ किछि जिंस थाए जोडा कि आमे डिजिटाइज करू, जेंदी पुराना मैन्युस्क्रिप्ट्स हला, पुराना बुक्स जोडा कि फ्रैगाइल थिबो ताकू प्रिजर्व करिया पे आमे से जिंस गुडा कोन डिजिटाइज करू। लास्ट क्लास रे आमे डिजिटाइजेशन रो प्रोसेस गुडा देखिथिले। काहे कि आमे डिजिटाइज करू फॉर द लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। आ से जिंसटा एबे होची प्राइम कंसर्न डिजिटल प्रिजर्वेशन। केमिति डिजिटल प्रिजर्व करे जिवो आ काहे कि तारो आवश्यकता वर्तमान बढ़ी जाउछ। देखो की डेफिनेशंस गुडा देखिबा, सब गुडा नै किछिटा देखि दबा खाली बुझिबा पे, कारण एग्जाम रे तो हमरा एमसीक्यू आसीबो, खाली डेफिनेशन को टाइप रे दिया जायछि बुझियो चेष्टा कर। देखो प्रथम डेफिनेशन दला एएल रो डिजिटल प्रिजर्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज। देखो कौन दला कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज देन स्ट्रेटेजिक एक्शंस दैट एंश्योर एक्सेस टू डिजिटल कंटेंट ओवर द टाइम, मींस लॉन्ग टर्म एक्सेसिबल हे परिबो। देन इग्नोर डेफिनेशन देखो कौन देछि डिजिटल प्रिजर्वेशन एनकम्पासेस ए ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू एक्सटेंड द यूजेबल लाइफ ऑफ मशीन रीडेबल कंप्यूटर फाइल। जोटा आमे डिजिटाइज करिछु सेडा कोन सेडा गोटे मशीन रीडेबल कंप्यूटर फाइल, ताकू जेमिति आमे लॉन्ग टर्म पे एक्सेसिबल करि परिबो से ऊपर देखियो। देन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मीडिया फेलियर, फिजिकल लॉस एंड ऑब्सोलेंस। ओके आ गोटे इंपोर्टेंट टर्म रहला जेटा पिला कंफ्यूज होंती एडा देखो डिजिटल प्रिजर्वेशन और डिजिटाइजेशन बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिजिटाइजेशन होची कोन process of creating a digital copy from a physical original, और digital preservation होची कोन to ensure that copy remain accessible far in the long future। बुझी पारलो। नेक्स्ट देखो the viewing problem एटा कहले हार्वर्ड बेसर 2000। देखो प्राइमरी कंसर्न वर्तमान कोन होची लॉन्गेटिविटी ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट। viewing problem होची कोन चैलेंज of rendering digital content, माने एटा टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। किछटा एग्जांपल देछि बुझि जिवो। जेमे देखो सिस्टीन चैपल सीलिंग painted 500 years ago and still viewable today. Documents on 8-inch floppy disk from 1980s are completely impossible to view। देखो दीटा जिंस से कंपेयर करछि एग्जांपल। सिस्टीन चैपल माने जो पेंटिंग दा हेछि वॉल रे सीलिंग रे, ये सब गुड़ा जो पुराना देखियो चर्च गुड़ा करे एथिरे कोन बहुत भलो भलो पेंटिंग्स गुड़ा हेछि। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज रे देखियो तांका सीलिंग गुड़ा रे बहुत फ्लावर टाइप रो बहुत बढ़िया पेंटिंग थाउछि। से गुड़ा कोन बहुत वर्ष गला परे मध्ये से गुड़ा स्टिल व्यूएबल, बट डॉक्यूमेंट्स जो गुड़ा को पुराना टाइम रे फ्लॉपी डिस्क रे थिला से गुड़ा वर्तमान व्यूएबल की नाही, से गुड़ा ऑब्सोलेट हो गले। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन नीड्स कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन टू सर्वाइव। बुझला जो डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रिएट हेछि बा डिजिटाइज करे जायछि बा बर्न डिजिटल से माने कोन दरकार कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन दरकार। इमिदि नै जे से माने सेल्फ आर्काइव करि होबो प्रिंट करी। बुझला हिस्ट्री शोस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आर द प्रॉब्लमेटिक बाय डिफॉल्ट इवन विथ प्रोएक्टिव प्रिजर्वेशन एफर्ट। देन द वेरिएबल मीडिया आर्ट community uses 4 strategies to address this। कौन स्ट्रेटेजी यूज कर जाए रिफ्रेशिंग, माइग्रेशन,
एम्युलेशन आउ रीइंटरप्रिटेशन। तो आगो को ए विषय रे अच्छी विषय डिटेल रे देखिबा, किसी टेंशन नहीं ना। नेक्स्ट देखो नीड फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन। डिजिटल प्रिजर्वेशन रा आवश्यकता कौन अछि? देखो नेसेसिटी फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन अराइज ड्यू टू 6 मेजर कैटेगरी ऑफ थ्रेड्स। 6टा मेजर थ्रेड आउ चैलेंजेस कौन कौन एगुड़ा को? प्रथम देला टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। पेन देखो ये कौन देछि, गोटे फ्लॉपी देछि, तापरे सीडी ड्राइव, सेगुड़ा जो आगरू थिला पुराना वर्तमान कौन पढ़ियोनी, ऑब्सोलेट हो गले से टेक्नोलॉजी गुड़ा को। देन सेकेंड रे कौन देला मीडिया फ्राजाइलिटी एंड बिट रॉट। मीडिया फ्राजाइलिटी जिन देख कौन सी एडा देख मैग्नेटिक टेप देछि, सीडी डीवीडी देछि, एमानंगर कौन था किछिला लाइफ स्पान था, तमे प्रिजर्व करी रखिले मध्य से लाइफ स्पान पर से खराब हो धीरे धीरे, जेमती सीडी डीवीडी रो 10 to 30 इयर्स था डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। तो 10 इयर्स पर से कौन हो धीरे धीरे डिटोरिएट होगा लगे, इवेन तुम रख प्रिजर्व करी खराब हो। सेमती मैग्नेटिक टेप डिग्रेडेशन हेले से बिट रॉट देखिए मिले, माने से फाइल गुड़ाक कौन हुए डिग्रेड है माने करप्ट होगा स्टार्ट हो। थर्ड है बॉन्ड डिजिटल कंटेंट। देखो बॉन्ड डिजिटल कंटेंट कहीं कहला, बर्तमान बहुत गुड़िए ई बुक्स ई जर्नल्स डायरेक्टली बॉन्ड डिजिटल रे पब्लिश हो, कारण से गुड़ार डिजिटल ही एग्जिस्टेंस अच्छी, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जदि किछिटा डिलीट होची बा लॉस होची तो सेटा कंप्लीटली इरिवर्सिबल लॉस। नेक्स्ट आसला कल्चरल एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन। देखो नेशनल मेमोरी, ओरल हिस्ट्री, फोक म्यूजिक, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट स्कैन एगुड़ा कौन प्रिजर्व कर जाउची। गोटे जिनस माइंड रे रखिया पड़िबो, जेतेबेले आमे नेशनल मेमोरी बा कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करछु तार मल्टीपल कॉपी करियो पड़ियो, कारण आउ टाइम टू टाइम तो माइग्रेट करियो पड़ियो, कारण एगुड़ा जदि वंस लॉस हो जाउची आको माने ए लॉस टा कोन इरिवर्सिबल, आको हमें रिवर्स कर परिबनी। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव वॉल्यूम ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। प्रति सेकेंड रे मींस सुनामी ऑफ डाटा एमर्ज होच प्रति सेकेंड रे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल डाटा ग्रोथ होची ताकू केमिति ऑर्गेनाइज करी हो, मेंटेन करी हो, और को जिंस को हमें प्रिजर्व करिया दरकार सेटा भी गोटे जिंस प्रॉब्लम रोची। सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर द डिजिटल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन, जेमती गवर्नमेंट रो लीगल ऑब्लिगेशन गुड़ाक, लीगल पॉलिसी फाइल ये गुड़ाक लॉन्ग टर्म एक्सेसिबल दरकार, रिसर्च पाई रिप्रोड्यूस पाई, जेमती फाइनेंशियल और मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी मैंडेट गुड़ाक। ओके देखो आ विषय डिटेल टिके देखि नबा। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस जेमती देखले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ रे आसीबो, जेमती किछि वर्ष पर आउटडेटेड ही जाउची, लेटेस्ट वा अपडेटेड वर्जन आसी जाउची, तो फाइल फॉर्मेट गुडा भी धीरे धीरे फ्यूचर अनरीडेबल हो जाउची। जेमती फ्लॉपी रो एग्जांपल देखुथिले, आ गोटे एग्जांपल देछि वर्ड परफेक्ट। तो स्पेशल सॉफ्टवेयर दरकार ताको ओपन करिया पे, वर्तमान जदि ओपन करछु 1990s रो वर्ड परफेक्ट, तो वर्तमान कोन धीरे धीरे फाइल फॉर्मेट टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड हो जाउची। जेमती आमे देखिबा एग्जांपल आगरो डॉक यूज करथिले, वर्तमान कोन आसी गलानी डॉक्स। तो धीरे धीरे कोन फॉर्मेट रे भी चेंजेस आछू, अपग्रेड ही आछू। देखो डिजिटल डाटा is not self archiving, so it requires continuous human intervention. Then asila media fragility and bit rot. Media fragility जोड़ा कथा होतले मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, डीवीडी एगुडार किछिला लाइफ स्पान थाए 10 to 30 years अंडर आइडियल कंडीशंस। तो से फेनोमेनन टा कोन धीरे धीरे तार लिमिट गला परे डिग्रेड ही जाए, ताको कह जाए हमें बिट रॉट, माने ग्रेजुअल डाटा करप्शन। हार्ड ड्राइव देखो एडा गोटे हला। देन मीडिया फ्राजिलिटी आ कोन देखियो हार्ड ड्राइव क्रैश, नले ऑप्टिकल डिस्क किछिटा स्क्रैच हे गला, ह्यूमिडिटी बा यूवी लाइट एक्सपोज हला, तो सेथिरे किछि प्रॉब्लम आसे।
unlike paper centuries or stone in inscriptions जमी पेपर रे कौन बहुत वर्ष है से प्रिजर्व हो रोचे आ स्टोन इनक्रिप्शंस बर्तमान भी जीवा आमे जदी हाथी गुंफा खंडगिरी उदयगिरी ए सब एरिया रे बहुत गुडी स्टोन रे जिंस इनस्क्राइब कर जाय छै से गुडा कोन मिलेनिया रो अछि देन डिजिटल मीडिया गुडा कोन फ्रैगाइल मोस्टली बॉर्न डिजिटल गुडा को a single bit flip can corrupt an entire file invisible until accessed किछिरा गोटे small change okay then देखो bond digital content many documents now exist only in digital form no print equivalent exist then the e-journal electronic thesis and dissertation government e-records गुडा को social media archive web pages ए गुडा को देखो bond digital रे problem कोन once loss हला सेटा permanent loss irreversible loss of knowledge आउ एग्जांपल दे देखो ई ज्ञान कोर्स इथरे कोन lacks of digital learning objects अछि with no physical backup then asala cultural and heritage preservation national memory and cultural heritage are now primarily digital oral history recordings folk music digitizations rare manuscript scans ये सब गुडा को प्रिजर्वेशन दरकार लाइब्रेरीज आर्काइव म्यूजियम्स ए माने होचंदी कोन कस्टोडियन हमर इरिप्लेसेबल हेरिटेज द लॉस ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड इज इरिवर्सिबल कारण तार आउ सेकंड कॉपी किछि नाही ऑथेंटिक ओरिजिनल देन आसला एक्सप्लोसिव वॉल्यूम ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन देखो थाउजेंड्स ऑफ डाटा डेली क्रिएट होचे तो डिजिटल इंफॉर्मेशन कोन होची तार वॉल्यूम बहुत बड़ी हो जाउछ इग्नो इग्वान कोर्स रे एवरेज 10000 प्लस व्यूज पर डे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओईआर रिपोजिटरी शोध गंगा एनडीएलआई एनओपीआर माने भी मिलियंस ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स बा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रखिसंदी जोडा मैनेज करिया दरकार द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिसर्च डाटा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डेली ये सब गुडा को ग्रो हे चलछ तो आमे कोन करियो चैलेंज आछी एटा कोन सिलेक्शन एंड अप्राइजल जे कोडा प्रिजर्व करबो देन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशन जेंदी गवर्नमेंट रिकॉर्ड करी लीगल ऑब्लिगेशंस तो एटा लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करियो पडियो आ एक्सेसिबल करियो पडियो सेंदी रिसर्च डाटा प्रिजर्व करियो दरकार फॉर द फ्यूचर वेरिफिकेशन रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड पीयर रिव्यू देन फाइनेंशियल एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स must be retained in accessible authenticated format then institutional repository mandate कोची फंडिंग एजेंसी और रेगुलेटर्स माने ताको पब्लिश करिया पे तो एटा थिला हमरा नीड नेक्स्ट देखिया पर्पस ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन देखो डिजिटल प्रिजर्वेशन रो पर्पस होछ कोन डिजिटल स्टोरेज आ बैकअप करियो इट एनकम्पासेस स्ट्रेटेजिक कल्चरल legal and intellectual goals प्रथम पर्पस रे आसिला ensure long term accessibility केमिति डिजिटल कंटेंट ता फ्यूचर जनरेशन पे एक्सेसिबल हे परिबो रिगार्डलेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज सेटा देखियो नेक्स्ट हला मेंटेन ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी जेंदी जो भी डिजिटल ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करछु सेटा ट्रस्टवर्दीनेस हेबार अछि कंटेंट ता सेम टू सेम रहिबार अछि अनचेंज्ड जादर कि आमे पर भी वेरीफाई करि परिबा देन आसला कम बैक टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर्मेट ऑब्सोलेंस ए तीन टाइप रो देखियो मिलछ हमु हार्डवेयर जोडा देखले आमे फ्लॉपी रु आमे वर्तमान कोन डिजिटल ड्राइव डिस्क एसएसडी ए सब गुडा को आसलो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे प्रतिदिन अपग्रेड ही जाउची देन फॉर्मेट ऑब्सोलेंस ही जाउची नुवा नुवा फॉर्मेट आउची जोडा कि न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू सॉफ्टवेयर गुडा को सपोर्ट करछि तो ए गुडा को केमिति कम बैक करबा थ्रू माइग्रेशन जेमि कोन फ्लॉपी रो मल्टीपल कॉपी करबो डाटा तार लिमिट पूर्वरु माने देखो सीडी रो जेमि 10 टू 30 इयर्स सीडी डीवी रो तमे ता पूर्वरु कोन करियो तार माइग्रेट कर देबा से जिंसडो अन्य सीडी डीवी देन एमुलेशन स्टैंडर्ड एड्रेस एसो गुडा को देन सेफगार्ड कल्चरल हेरिटेज नेशनल हेरिटेज रेयर मैन्युस्क्रिप्ट आ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आको डिजिटल फॉर्म रे केमिति सेफगार्ड करिवो प्रॉपर माइग्रेशन सब गुडा देन सपोर्ट रिसर्च कंटिन्यूटी
enable scientists and scholars to access archived data for future studies, replication and verification. Then ଆସିଲା legal and regulatory compliance, ଯେମିତି requirement ଥିବ meets जो institution ର record keeping ପାଇଁ accountability ପାଇଁ ତା standards ରେ କରିବ. Cost efficiency, देखो proactive preservation is cheaper than emergency data recovery. Proactive माने कंटिन्यू जदि आमे प्रिजर्वेशन पे इफोर्ट दोथुवा. देन इमरजेंसी डाटा रिकवरी कोन, जदि थरे डाटा लॉस हो जाउची तबे आमे जदि डाटा को रिकवर करछु ते सेटा कॉस्ट कोन हबो अधिक आसीबो हमहु. जदि आमे कंटीन्यूअस प्रिजर्वेशन पे इफोर्ट दोथुवा डाटा माइग्रेशन करथुवा तबे हमहु मेंटेनेंस डेली हिसाब रे कम खर्च आसीबो. सेति कोन लिखा है जे प्रिवेंशन ओवर क्यूर. देन यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस, make preserve information globally means समस्त को open digital repository रे accessible करेगा. देखो एटा गोटे भलो कोटेशन दिछि, the goal of digital preservation is the accurate rendering of authenticated content over time. देखो आ गोटे important देला the three legged stool of digital preservation. तो three legged stool जानचो तो डिजिटल प्रिजर्वेशन मेन तीन पिलर कौन. प्रथम लेग होचे टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी रे आसीबो हमरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड प्रिजर्वेशन टूल्स फाइल फॉर्मेट ए सब गुडा. देन आसिला रिसोर्सेस. सो रिसोर्सेस रे कोन आसीबो सस्टेनेबल फंडिंग, ट्रेन स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, स्टोरेज सिस्टम, ऑनगोइंग ऑपरेशनल बजट, नो वन टाइम सॉल्यूशन. देन आसला ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज आसीबो, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मैंडेट, लीडरशिप, कमिटमेंट, कम्युनिटी कोलैबोरेशन और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी. से जिंस गुडा हे दिस कोन देला रिकॉल कर दियो. प्रथम देला लॉन्ग टर्म एक्सेस, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी, कॉम्बैट टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, सेफगार्ड कल्चरल हेरिटेज, support research continuity, then legal and regulatory compliance, prevention over cure, जेमि हमें कोन स्मॉल इनिशियल पेमेंट गुडा को कले भलो आमे जदी कंटीन्यूअस इफोर्ट दोथुवा प्रिजर्वेशन पे देन यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस. देन आसिला स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन. स्टैंडर्ड रे प्रथम आसीबो देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन करे प्रोवाइड करे गोटे फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्टेंट इंटरऑपरेबल डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रैक्टिस. तो एगुड़ा हेवीली टेस्ट होची. तो प्रथम देखिबा OAIS होची ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ए को स्टैंडर्ड फॉलो करे ISO 14721 2002 आगरु फॉलो करथुना, बर्तमान रिवाइज ही कोन हो जाय ISO 14721 2012. एटा किए डेवलप करछि CCSDS कंसल्टेटिव कमिटी फॉर स्पेस डाटा सिस्टम्स विथ माने तास अन्य लाइब्रेरी गुडा भी इन्वॉल्व छला. तार मेन पर्पस कोन थिला फाउंडेशनल कंसेप्चुअल रेफरेंस मॉडल फॉर ऑल डिजिटल प्रिजर्वेशन सिस्टम ग्लोबली. तार की कांसेप्ट कोन अछि. फर्स्ट डेजिग्नेटेड कम्युनिटी, व्हाट अ स्पेसिफिक यूजर ग्रुप whom information is being preserved in the knowledge based shape all preservation decisions. Then asila 3 information package type. तो एथिरे तीनटा information type package था. गोटे हला SIP हला submission information package from producer, AIP archival information package stored internally, then DIP dissemination information package to consumers. ताको हमें जब देखो मॉडल रे जदी देखिबा पूरा कांसेप्ट देखो. फर्स्ट आसला प्रोड्यूसर जो इन्फॉर्मेशन देला को फॉर्म रे SIP सबमिशन इन्फॉर्मेशन पैकेट. तो एई गला स्टार्ट पॉइंट रे इंजेस्ट हला. इंजेस्ट माने एंट्री पॉइंट रे कोन होय क्वालिटी चेक हला. क्वालिटी चेक हे गला. देन नेक्स्ट गला AIP होची आर्काइवल इन्फॉर्मेशन पैकेज. से एठू मूव कला आर्काइवल स्टोरेज को जोटा होची गोटे को रिपोजिटरी. सेथिरु मूव कला आगो को
डाटा मैनेजमेंट बा मेटाडाटा इंजिन। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड मेटाडाटा इंजिन को गला। नेक्स्ट एटा कौन है डिस्ट्रीब्यूट हम एटा दी वे जाऊँगी गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन मैनेजर आ गोटे वाला प्रिजर्वेशन प्लानिंग जोटा फ्यूचर प्रूफिंग पे मॉनिटर करिवो एनवायरनमेंट आ इंफॉर्मेशन सेक्शन। देन आगो जाऊँगी कौन एक्सेस बा यूजर इंटरफेस आमको दीटा मिलिबो डीआईपी डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन पैकेज रे फर्स्ट हला कंज्यूमर देन हला डेजिग्नेटेड कम्युनिटी स्पेसिफिक कम्युनिटी को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से देखो तार 6 फंक्शनल कंपोनेंट देछि इंजेस्ट होछि कोन एंट्री पॉइंट जोटा एक्सेप्ट करे इंफॉर्मेशन पैकेज एसआईपी फ्रॉम द प्रोड्यूसर से कम करे क्वालिटी चेक करे कंटेंट वैलिडेट प्रिपेयर करे ट्रांसफर करे ताको एआईपी। देन आर्काइवल स्टोरेज जोटा कि को रिपोजिटरी स्टोर मेंटेन एंड रिटाइप्स आर्काइवल इंफॉर्मेशन पैकेज मैनेज स्टोरेज मीडिया एरिया की परफॉर्म एरर चेकिंग रूटीन बैकअप रेप्लिकेशन टू मल्टीपल लोकेशन। देखो ए स्टेप दा इंपोर्टेंट replication to multiple location and disaster recovery. Then data management होची metadata engine रे से मेंटेन करे descriptive information database and associate metadata. Then administration से manage करे overall archival operation, negotiate submission agreement with producer, define policies, monitor standard compliance ऐसा। Then preservation planning माने फ्यूचर प्रूफिंग मॉनिटर करे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट ऑब्सोलेंस रिस्क ये सब गुड़ाक आ कौन रिकमेंड करे माइग्रेशन प्लान प्रिजर्वेशन पॉलिसीज अपडेट्स टू आर्काइवल स्टैंडर्ड्स फॉर लॉन्ग टर्म एक्सेसिबिलिटी। ओएआईएस मॉडल हला तार लास्ट पार्ट हला एक्सेस जोटा कि देखिले दी टाइप रो एक्सेस मिले गोटे कंज्यूमर गोटे डेजिग्नेटेड कम्युनिटी को। नेक्स्ट मॉडल देखिबा हमें प्रेमिस। देखो प्रेमिस रो फुल फॉर्म होची प्रिजर्वेशन मेटाडाटा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज ए फॉलो करे स्टैंडर्ड आईएसओ 22927 2017 एटा मेंटेन करा जाए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा इफेक्टो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रिजर्वेशन मेटाडाटा एटा वर्ल्ड वाइड वी यूज हुए। देखो प्रेमिस मॉडल रे कोन कोन आसे होचे चारटा सिमेंटिक यूनिट आसे गोटे हला ऑब्जेक्ट माने डिजिटल फाइल्स गुडा को देन आसला इवेंट जो एक्शन परफॉर्म करा गला देन एजेंट्स माने पीपल बा सिस्टम्स राइट्स माने लाइसेंसिंग। देखो ऑब्जेक्ट्स रे कोन आसे डिजिटल फाइल्स बिट स्ट्रीम ओके देन इवेंट्स रे एक्शंस वैलिडेशन गुडा को एजेंट्स रे आसीबो सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशंस राइट्स रे आसीबो लाइसेंसिंग परमिशन प्रोग्राम्स ए सब गुडा को एटा वाइडली सपोर्ट होची कमर्शियल और ओपन सोर्स डिजिटल प्रिजर्वेशन टूल हिसाब रे आ ये कौन करे ओएआईएस पीडीआई रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट मॉडल होची मेटाडाटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मेट्स इट इज a standard for encoding and transmitting metadata for digital library objects. It extends descriptive metadata to include structural and technical metadata. It describes organization and relationship of component part within a complex digital object. It includes software, hardware, relevant digital object and digital specifics. देखो ए मॉडल टा देखो मैथ्स टा बुझा पड़ले देखो प्रथमे कोन आसला डिजिटल स्पेसिफिक रिजोल्यूशन मैथ्स एक्सटेंड कला तो एथिरे कोन डिजिटल फाइल गुडा को टीआईएफएफ हला देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वीडियो ऑडियो जहाँ भी फाइल अच्छे से गला कोथी को मैथ्स को गला एआईपी आर्काइवल इंफॉर्मेशन पैकेज को सेथिरे कोन हला descriptive metadata
आउ एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा रे कोन आसीबो सोर्स इन्फो सब्जेक्ट ये सब गुड़ाक एडमिनिस्ट्रेटिव रे कोन आसीबो राइट्स डिजिटल पॉलिसीज टेक्निकल डिजिटल प्रोवेंस ये सब गुड़ाक आसीबो एआईपी पर आर स्ट्रक्चरल मैप क्रिएट हो डिजिटल ऑब्जेक्ट रो रिलेशनशिप्स कोडा इमेज फॉर्मेट कोडा टेक्स्ट फॉर्मेट डिजिटाइजेशन स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइल गुड़ाक ऑडियो फाइल्स सॉफ्टवेयर तापर से गुड़ा जाए कोठी आर्काइवल स्टोरेज को स्ट्रक्चरल मैपिंग पर ऑर्गेनाइज कला पर या छड़ा अन्य स्टैंडर्ड इनिशिएटिव गुड़ा भी अच्छे एथिरु क्वेश्चन पचाए थे किसी टाइम रे फुल फॉर्म भी पचाए थे देखो ISO 16363 2012 एटा होची ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी डिजिटल रिपोजिटरीज UK then TRAC trustworthy repository audit and certification criteria and checklist एटा भी होटे ऑडिट फ्रेमवर्क देन पीडीएफ ए फॉलो करे ISO 19005 पीडीएफ ए होची लॉन्ग टर्म आर्काइवल पय फॉन्ट गुडा को कलर प्रोफाइल्स मेटाडाटा ऐसा गुडा देन प्रोनाउन फाइल फॉर्मेट रजिस्ट्री बाय यूके नेशनल आर्काइव जोटा कि फॉर्मेट आइडेंटिफिकेशन और प्रिजर्वेशन पे यूज है देन आसेला जॉब ड्रॉइड फिट्स एगुडा फॉर्मेट गुडा का आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन टूल्स फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन वर्कफ्लो देन डब्लिन कोर आमे जानचो एटा गोटे मेटाडाटा स्टैंडर्ड 15 टा एलिमेंट अछि देन लॉक्स एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे लॉक्स LOCKSS आ फुल फॉर्म होची कोन लॉट ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ एटा होची के डेवलप करछे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आ ऊपर क्वेश्चन आसे देन क्लॉक्स होची कंट्रोल्ड लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ एटा होची डार्क आर्काइव ये ट्रिगर करे कंटेंट ऑन पब्लिशर फेलियर नॉट फॉर जनरल एक्सेस मोस्ट ऑफ द जिंसो माने स्टैंडर्ड्स गुडा क्लियर हो जाइतिबो नेक्स्ट देखिया मेथड ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन देखो एगुडा आमे स्टार्टिंग रे देखि दिले 6 प्राइमरी मेथड्स जेमदि रिफ्रेशिंग फॉर्मेट माइग्रेशन एम्युलेशन टेक्नोलॉजिकल प्रिजर्वेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहि दोछि देन डिटेल रे जिबा देखो रिफ्रेशिंग रे कोन होछि डाटा कॉपी करे जाए फ्रॉम एजिंग मीडिया तो तुमको कहला सब गुडा रे कोन स्पेसिफिक एज लिमिट था तो एजिंग मीडिया रो नो स्टोरेज डिवाइस को डाटा कॉपी करा जाए देन फॉर्मेट इंटीग्रेशन जेंति पुराना WS फॉर्मेट रो DOC देन DOCX न्यू फॉर्मेट को जाउछ PDF A वर्ड परफेक्ट रो PDF A और TIFF फॉर्मेट तो फॉर्मेट माइग्रेशन जो फॉर्मेट गुडा को ऑब्सोलेट हो जाउछि सेथिरु कंटेम्परेरी बा लेटेस्ट फॉर्मेट को अपग्रेड करियो जादर कि सही जिंसटा लॉन्ग टर्म पे एक्सेसिबल हे परियो देन आसला एम्युलेशन होछि मॉडर्न सॉफ्टवेयर टू मिमिक ऑब्सोलेट हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जे आमे ताकू गोटे ए टाइप रो एनवायरनमेंट क्रिएट करबा जे से पुराना एनवायरनमेंट टा क्रिएट करबा जो टाइम रे से क्रिएट हेतला जादर कि आमे से फाइल को एक्सेसिबल करि परियो देन आसला टेक्नोलॉजिकल प्रिजर्वेशन मेंटेनिंग ओरिजिनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल मटेरियल्स देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन तो एक कौन करियो कन्वर्ट्स करियो डाइवर्स डिजिटल एसेट इनटू रोबस्ट ओपन सोर्स फॉर्मेट जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करि हबो देखो प्रथम मेथड देखो माइग्रेशन रे कोन आसीबो जे पीरियडिकल ट्रांसफर ऑफ डिजिटल मटेरियल फ्रॉम हार्डवेयर वन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर मोस्ट वाइडली रिकमेंडेड ए मेथड को बोथ OAIS और ALA दि जन गुडा को प्रमोट करछन्दी OAIS कौन कहे no matter how well an OAIS maintains its current holdings it will eventually need to migrate to much of its holdings to a different media or hardware software environment जेंदी रिफ्रेशिंग केते टाइप रे देखियो मिलिबो हमको रिफ्रेशिंग फिजिकल मीडिया माइग्रेशन देखो फिजिकल मीडिया माने
आमर डीवीडी सीडी बा हार्ड ड्राइव एथिरु आमे डाटा माइग्रेट करछु देन फॉर्मेट माइग्रेशन ते फाइल फॉर्मेट रे माइग्रेट करबा कंटेंट माइग्रेशन प्लेटफॉर्म चेंज करबा देन वर्जन माइग्रेशन होची सॉफ्टवेयर वर्जन चेंज होबा नॉर्मलाइजेशन preemptive migration at ingest converting all incoming files into standard format okay Australian National Archive ए टाइप रो यूज करो बट एथिरे रिस्क थाए कोन ऑथेंटिसिटी कंप्रोमाइज हे पारे ड्यूरिंग द फॉर्मेट कन्वर्सन किछि एग्जांपल देछि द फाइल कन्वर्सन डीओसी टू डीओसीएक्स बतन पीडीएफ ए यूज करा जाउ आर्काइवल पय देन सीडी रोम रो हार्ड ड्राइव बतन रो कोन क्लाउड स्टोरेज किछिटा एग्जांपल देछि टाइप रो then asila method 2 hochi emulation replication the functionality of an obsolete hardware or software system recreating original environment to render digital objects without altering the object type देखो environment change हेची but object same रहिछि digital object original file जेमि थिला original format same to same अछि endorsed by ALA alongside migration as a co-primary preservation strategy देखो preserve the exact look and feel and fully functionality of the original system तो से माने कोन करंती कंप्लीटली जेमिति अछि सेमिति प्रिजर्व करंती एटा कोटा पे भलो एप्लीकेबल होछि इंटरैक्टिव डिजिटल ऑब्जेक्ट पे जेंति वीडियो गेम मल्टीमीडिया वेब आर्काइव इंटरैक्टिव आर्ट देखो कोनिक लीजे बिब्लियोथेक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नेदरलैंड ए रिलाय करे एमुलेशन एज ए प्राइमरी स्ट्रेटजी और रहला रेमंड ए लोरी आईबीएम अल्मदेन ए प्रपोज करे यूबीसी यूनिवर्सल वर्चुअल कंप्यूटर गोटे सिंगल एमुलेटर फॉर ऑल प्लेटफॉर्म नेक्स्ट देखियो रिफ्रेशिंग होचे ट्रांसफर ऑफ डिजिटल कंटेंट फ्रॉम ए वन फिजिकल स्टोरेज मीडियम टू अनदर ऑफ द सेम टाइम माने कंटेंट किछि चेंज करियोनी खाली हमें कोन जेहेतु गोटे हार्डवेयर बा फिजिकल स्टोरेज डिके हो जाउची तार टाइम पीरियड पर डिग्रेड हेबो जाउची हमें ता पूर्व रो कोन करबा ताको द सेम काइंड हमें ट्रांसफर करि परिबा प्रिजर्वेशन पे नॉट फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर ऑब्सोलेंस एटा होची कोन फिजिकल डिके में ओके ओएस कोन क्लैरिफाई करे रिफ्रेशिंग एज ए सबसेट ऑफ माइग्रेशन हैला इट मस्ट बी परफॉर्म बिफोर मीडिया डिग्रेड बियॉन्ड रिकवरी does not protect against technological obsolescence only media failure in the old magnetic tape ru nuwa magnetic tape को ट्रांसफर करबा नाले पुराना सीडी रोम रो nuwa सीडी रोम को बा पुराना हार्ड ड्राइव रो nuwa हार्ड ड्राइव बुझले देन आसिला रेप्लिकेशन माने क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी एग्जैक्ट आइडेंटिकल देखो डिजिटल ऑब्जेक्ट रो मल्टीपल सिस्टम और जियोग्राफिक लोकेशन रे मल्टीपल कॉपी क्रिएट करे जाय काहे ना एक्सीडेंटल बा इंटेंशनल लॉस रू हार्डवेयर फेलियर रू बा फिजिकल डिजास्टर रू आको प्रोटेक्ट करिया पे क्रिएट मल्टीपल कॉपीज इन डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन एथमे लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टॉप सेफ एटा हो जोटे क्लासिक एग्जांपल डाटा दैट एग्जिस्ट इन ए सिंगल कॉपी इन ओनली वन लोकेशन इज हाईली वल्नरेबल सिधे हमें मल्टीपल कॉपी करिया दरकार देन क्लॉक्स कंट्रोल लॉक्स एटा हो डार्क आर्काइवल फॉर्म of replication of scholarly content. Then OAS replication form of migration. That was a bitstream copying. बुझला? Then आउरी अछि RAID redundant array of independent disk जोरा hardware replication. Then peer-to-peer replication bitstream copying ऐसा गुड़ा किसीरा example अछि. Then आसिला encapsulation. Encapsulation होची bundling digital objects together with all information needed to render them जेमि सब गुडा कंबाइन हेई गोटे बंडल हे जिवो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन मेटाडाटा रेंडरिंग एनवायरनमेंट गोटे सिंगल सेल्फ कंटेंट पैकेज क्रिएट करा जायथियो बुझला फॉर कलेक्शंस नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रेंडर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड डार्क आर्काइव पई नो होई जेमिति आगुरु कोन होतला डॉस जो सॉफ्टवेयर होतला से बंडल हो जाउथला डॉस बॉक्स एमुलेटर सहित सेथिरे तार लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंटेशन सब गुडा कोन आर्काइवल पैकेज कंबाइन हे कि आस जायथियो तो सिमिलर एमुलेशन बंडल गुडा का पैकेज गुडा को क्रिएट करे छ जिन यूबीसी यूनिवर्सल वर्चुअल कंप्यूटर
सेटा कोन एनकैप्सुलेशन स्ट्रेटजी यूज करे रैमंड लोरी जोरा कि प्रोड्यूस करे बहुत लार्ज फाइल्स। नेक्स्ट आसिला टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन preserving original hardware and software environment. Computer museums specifically run and access original digital objects in the native unmodified environment. बा आमे सही environment create करिवा जो पुराना obsolete हे गलानी तार environment create करिवा आउ सही फाइल को सेथिरे रन करिवा। Then not scalable for large collection. Spare parts become unavailable. Capacitors fail पुराना टाइप रो used only as a last resort when emulation and migration are not feasible हला एटा प्रिफर करंदिनी बट एटा लास्ट रिसोर्ट कहि परिबा। Then very high maintenance cost and specialized expertise required. Computer history museum California ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन गुडा को ए सब करंती। माइक्रो कंप्यूटर टू रीड ओरिजिनल बीबीसी डीएफएस फ्लॉपी डिस्क बुझला। देखो आमे जदि सब गुडा कंपेयर करिवा डिफरेंट मेथड गुडा को माइग्रेशन बेस्ड एड्रेस कौन करे फॉर्मेट ऑब्सोलेंस देन एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑब्सोलेंस रिफ्रेशिंग मीडिया डिग्रेशन रेप्लिकेशन डिजास्टर और एक्सीडेंटल लॉस एनकैप्सुलेशन लॉन्ग टर्म डार्क आर्काइव देन टेक प्रिजर्वेशन लास्ट रिसोर्ट बुझला। एटा इम्प्रैक्टिकल बट जदि करिवा बहुत कॉस्ट आसीबो टेक प्रिजर्वेशन देखो टेक्निक्स ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन देखो प्रथम आसिला चेकसम एंड फिक्सिटी चेकिंग। चेकसम होची मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट ऑफ ए डिजिटल फाइल जनरेटेड बाय हैशिंग एल्गोरिदम। तो प्रत्येक जो फाइल अछि तार डिजिटल फाइल रो मैथमेटिकल एल्गोरिदम जनरेट होची चेकसम ऑफ फिक्सिटी चेकिंग। तो एथि जो कोन होची पीरियडिकली चेकसम कंफर्म गोची जे बिट रॉट किछि हबनी माने साइलेंटली डाटाटा करप्ट हबनी किछरे भी सिंगल चेंज हेले बिट रे से कोन करिवो कंप्लीटली डिफरेंट चेकसम प्रिपेयर करिवो। तो प्रेमिस रिकॉर्ड फिक्सिटी मेटाडाटा फॉर एवरी प्रिजर्व्ड ऑब्जेक्ट एंड ए मैंडेटरी फील्ड। तो एटा कोन नॉन नेगोशिएबल प्रोसेस in all certified trusted digital repository कोन checksum of fixity checking। then आसिला normalization देखो normalization होची जहाँ भी फाइल आसिला इनकमिंग डिजिटल फाइल ताको गोटे सिंगल स्टैंडर्ड रे फॉर्म करिया well supported format at point of ingest before storage पूर्वरु normalization कोन सब गुडा इनकमिंग डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को सिंगल स्टैंडर्ड रे फॉर्म करी well supported format देखो इंजेक्शन पूर्वरु से सेम फॉर्मेट रे प्रिपेयर कर देथिबो आकु कोन कह जे प्रिमिटिव माइग्रेशन ऑन इनपुट जोडा वैरायटी ऑफ फॉर्मेट को रिड्यूस कर दिए आउ सिंगल फॉर्मेट जोगो मैनेज करिया पे लॉन्ग टर्म बेटर हुए। एडा के फॉलो करे ऑस्ट्रेलियन नेशनल आर्काइव्स ओके। देन फॉर्मेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन देखो एथिपे कोन यूज हुए टूल्स यूज हुए फाइल फॉर्मेटिंग टूल्स जेमिति हला ड्रॉइड डिजिटल रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जोव जेस्टर हार्वर्ड ऑब्जेक्ट वैलिडेशन एनवायरनमेंट देन फीड्स फाइल इंफॉर्मेशन टूल सेट ए सब टूल्स गुडा के यूज करा जाय। देन प्रोनम होचे ऑथोरिटी फाइल फॉर्मेट रजिस्ट्री जेरा मेंटेन करे नेशनल आर्काइव्स यूके रेफरेंस ऑफ प्रिजर्वेशन डिसीजन जो वैलिडेट करे कोन कैरेक्टराइज फॉर्मेट ड्रॉइड आइडेंटिफाई करे अननोन फॉर्मेट अगेंस्ट फ्रॉम सिग्नेचर्स। देन प्रिजर्वेशन मेटाडाटा एटा कोन था पांचटा टाइप रे था गोटे हला डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा जोरा हमर डब्लिन कोर यूज करे 15टा एलिमेंट। देन आसला टेक्निकल मेटाडाटा टेक्निकल मेटाडाटा रे आसीबो हमर फाइल फॉर्मेट साइज रेजोल्यूशन कलर स्पेस। देन प्रिजर्वेशन मेटाडाटा एक प्रेमिस यूज करें फिक्सिटी प्रोविनेंस इवेंट हिस्ट्री एजेंट राइट्स एगुडा को। देन स्ट्रक्चरल मेटाडाटा सेटा होची मेट्स केमिति गोटे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रो पेज ऑर्डर होची फाइल रिलेशनशिप रेंडरिंग सीक्वेंस
देन राइट्स मेटाडाटा एटा आसीबो लाइसेंसिंग एक्सेस परमिशन कॉपीराइट स्टेटस एम्बार्गो डेट्स ए सब गुडा को आसीबो राइट्स रे OAIS PDI होची प्रिजर्वेशन डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन आकु कोन दरकार एथिरे पांच टाइप रो PDI देखियो मिले सबु AIP आर्काइवल इंफॉर्मेशन पैकेज पे पांच टाइप रो PDI देखियो मिले पहला प्रोविनेंस माने हिस्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल एक्शन परफॉर्म्ड record then रहला reference identifiers linking to the object then fixity जे checksum और error detection करे algorithm prepare करे then आसला context how the object relate to other information last रहला accessible rights access rights की access करि परिबो आ को condition then आसला हमरो DCL model बा DCC मॉडल भी कहा जाए डिजिटल क्यूरेशन सेंटर बा डिजिटल क्यूरेशन लाइफ साइकिल भी कहा जाए एक कम करे एक्सपांड करे प्रिजर्वेशन टू फुल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और स्टेप्स गुड़ा ही मन रखि दो फर्स्ट हला कॉन्सेप्चुअलाइज देन आसीबो क्रिएट बा रिसीव देन अप्रेज जेडा प्रिजर्व करे जीवन ना नहीं देन सिलेक्ट तापरे इंजेस्ट एंट्री पॉइंट रे दिया गला देन AIP प्रिजर्वेशन आउ स्टोर कलो लास्ट ला एक्सेस आउ रीयूज आसला TDR होचे ट्रस्टेड डिजिटल रिपोजिटरी एटा गोटे रिलायबल सस्टेनेबल प्रोवाइड करे कोन मैनेज डिजिटल रिसोर्स फॉर लॉन्ग टर्म कम फॉलो करे ISO 16363 2012 PTAB प्राइमरी ट्रस्टेड डिजिटल रिपोजिटरी ऑथराइजेशन बॉडी कवर करे ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी और सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत रिगोरस था बहुत अल्प ही रिपोजिटरी अछि वर्ल्ड वाइड जो माने फॉर्मल सर्टिफिकेशन रखि चंदी यार पिक्चर फॉर्मेट ता बुझी जिवो एथरे नेक्स्ट देखियो डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट देखो प्रथम नेशनल प्रोजेक्ट गुडा को देखियो तो प्रथम होची इग्नो ज्ञान कोश नेशनल रिपोजिटरी बाय इग्नो तो ये प्रिजर्व करे और डिस्ट्रीब्यूट करे OER बिल्ड ऑन डी स्पेस जोटा कि MIT और HSP प्रिपेयर करथिले ये यूज करे डब्लिन कोर मेटाडाटा मोर देन 68100 प्लस सब्सक्राइबर अछंती और पर डे 10000 प्लस व्यूअर अछंती ये होची वर्ल्ड रो सबुठु लार्जेस्ट OER रिपोजिटरी देन आसला हमर NDLI डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू राष्ट्रीय ई पुस्तकालय देन नेक्स्ट आसला शोध गंगा ये होची रिपोजिटरी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन टेन बाय इंफ्लिबनेट मैंडेटरी फॉर PhD सबमिशन ओके देन आसला ई शोध सिंधु एडा होची कंसोर्टिया for higher education e-resource merger of UGC Infonet Analyst and INSET AICT. ये provide करे e-journal access to Indian universities. Next आसला NOPR CSI NISCE ये कौन provide करे online periodical repository for digital preservation of Indian SNT journals published by CSI NISCE. Then National Mission on Cultural Mapping. ये कौन करे डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया's कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज देन राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ये होचे डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पार्टनरशिप विथ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लास्ट असला डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन यह दिला किछिटा नेशनल प्रोजेक्ट देन देखो किछिटा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आछो लॉक्स जोटा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करथिला लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिजर्वेशन नेटवर्क लाइब्रेरी स्क्रॉल एंड लोकल स्टोर पब्लिशर कंटेंट स्टोर करे सेंसस प्रोटोकॉल डिटेक्ट एंड रिपेयर करप्टेड कॉपीज ऑटोमेटिकली एडा तार स्पेशलिटी देन आसला क्लॉक्स कंट्रोल लॉक्स ये होची डार्क आर्काइव फॉर स्कॉलरली जर्नल आर्टिकल्स content triggered and made freely available when publisher ceases operations permanently जेतबे पब्लिशर टोटली तार ऑपरेशन बंद कर दिए सही कंटेंट गुडा को से
पब्लिकली एक्सेसिबल दिए नहले सेटा एक्सेसिबल नाही काहा. देन इंटरनेट आर्काइव एटा होची गोटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन सैन फ्रांसिस्को. आर स्पेशल होची वेबएक मशीन जे प्रिजर्व करे 800 बिलियन वेब पेजेस. Also digitize physical books, audio, video, largest public digital archive. नसला यूरोपाना एटा यूरोप रो ए अराउंड 3000 प्लस यूरोपियन कल्चरल इंस्टीट्यूशन आ सहित जुड़ी अछंदी. बिलियंस ऑफ डिजिटल बुक्स, आर्टवर्क्स, फिल्म, म्यूजिक एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स. इन क्लीजे बिब्लियोथेक नेदरलैंड रो ओनली लाइब्रेरी ऑफ नेदरलैंड एक्सेप्ट्स ओनली पीडीएफ फॉर्मेट फॉर प्रिजर्वेशन. प्राइमरी स्ट्रेटजी तार एम्युलेशन. Then asila Pandora, Australia, preserving and accessing network documentary resource of Australia. तारा full form भी पचरे. Okay. National Library of Australia, one of the world's earliest systematic web archiving initiative. Then asila Portico, Ithaca service for long-term preservation of scholarly content, post-cancellation access. Service for libraries, one of the first TDR certified repository. एटा मन रख पोर्टिको कारण ए सर्टिफिकेशन मिलियाटा डिफिकल्ट. देन आसला लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए, मेंटेन प्रेमिस स्टैंडर्ड, रन्स नेशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिजर्वेशन प्रोग्राम वेब आर्काइव रे. सो ओवरऑल एटा कंप्लीट हला. तो आ रिलेटेड किछिरा क्वेश्चंस अछि, अल्प क्वेश्चन अछि. देखो premise of OSSC models are two protocols for digital preservation. OSSC reference model was first approved as an ISO standard in which year 2002. Then second edition जोटा हमें देखि दिला 14721 रो first 2002 थिला, पर latest अछि 2012. LOC stands for lots of copies keep stuff safe. Then the refreshing preservation strategy primarily address which aspect? Physical media degradation and decay. Which organization maintain the premise preservation metadata standard? Library of Congress USA. The OSSC reference model was developed under the leadership of which organization? CCSDS, Consultative Committee for Space Data System. Which digital preservation strategy relate the original hardware software environment without changing the digital object? Emulation. IGNO eGyan course institutional repositories built on which open source software? DSpace. OSSC information package is delivered to end user consumers. DIP, dissemination information package. Sodhganga is a repository primarily for Indian electronic thesis and dissertation. The three-legged stool, digital preservation technology resource of organization. ISO 16363:2012 is the standard for audit and certification of trustworthy digital repositories. Normalization in digital preservation means preemptive migration of incoming files to standards formats at ingest. Same format कर दिया. Which are the first element of the BCC life cycle model? First element होची conceptualize. तापर आसीबो create. बुझला. Which digital preservation strategy primarily recommended by the OAIS reference model? Migration. So ए वीडियो रे एतिकी मु आशा करछि वीडियो टी भल लागिथिबो. So वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.